हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ पैथोलॉजी। हम जनरल पैथोलॉजी चैप्टर नंबर 2 मीडियम रॉबिन से डिस्कस कर रहे हैं और सेल इंजरी, नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं पिछली वीडियो में। टुडे वी हैव टू टॉक अबाउट द मैकेनिज्म्स ऑफ सेल इंजरी एंड देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट सेलुलर एडेप्टेशंस एंड इंट्रा सेलुलर अक्यूमुलेशंस एंड सेलुलर एजिंग के कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो इंजरी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था डिटेल में, इंजरी की कॉजेज, उसके पाथवेज, इसी तरह नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, ऑटोफेगी। आज वी हैव टू टॉक अबाउट के कौन कौन से मैकेनिज्म्स हैं, किस वजह से सेल इंजरी होती है और सेल डेथ जो है वो उसके रीजंस क्या हैं बेसिकली। बट बिफोर वी स्टार्ट अपॉन द कॉजेज, कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो इन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। सो बिफोर डिस्कसिंग इंडिविजुअल मैकेनिज्म्स ऑफ सेल इंजरी एंड डेथ, सम जनरल प्रिंसिपल्स शुड बी emphasized. Number one, cellular response to injurious stimuli depend on the type of injury, its duration as well as severity. देखो, सेल इंजरी की कई सारी कॉजेज है ना, इट कैन बी टॉक्सिन्स, इट कैन बी इन्फेक्शंस, इट कैन बी ट्रॉमा। सो डिपेंड करता है कि आपको हल्की चोट लगी है या बहुत ज़्यादा चोट लगी है, किस जगह चोट लगी है और किस किस्म की चीज़ से चोट लगी है, इन तमाम चीज़ों का इम्पैक्ट अलग होगा। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर छुरी या चाकू किसी को लगा है, सो इट्स अ शार्प ऑब्जेक्ट, सो देयर विल बी अ वेरी शार्प डैमेज, कट होगा स्किन पर या जिस जगह पे भी लग रहा है। हथौड़ा लगा है तो उसका इम्पैक्ट अलग होगा, कोई पत्थर सर पे गिर गया है तो उसका इम्पैक्ट अलग होगा। सो टाइप ऑफ इंजरी, ड्यूरेशन, कितनी देर के लिए इंजरी है, करंट लग गया किसी को फॉर एग्जाम्पल, और करंट एक ही दफ़ा लगा, झटके से बंदे से तार अलग हो गई या काफ़ी देर तक करंट लगता रहा, तो ये सारे अलग अलग तरह के इंजरी पैटर्न्स हैं और इनकी सिवेरिटी अलग अलग होगी। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट वाज द टाइप ऑफ इंजरी, ड्यूरेशन ऑफ इंजरी एंड सिवियरिटी। इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि हम ये नहीं कह सकते कि चाकू से हमेशा एक ही तरह की इंजरी होगी। दैट्स नॉट द रूल। द रूल इज इट ऑलवेज डिपेंड्स कि क्या था। इसी तरह एक ही तरह के बैक्टीरिया से एक ही बंदे में अलग अलग टाइम्स पर अलग अलग तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन डोज क्या था। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ग्लास ऑफ वाटर पी रहा हूँ, इसमें देयर आर सम बैक्टीरिया और वो मैं निकल जाता हूँ, पी जाता हूँ, कंपेयर टू अनदर ग्लास ऑफ वाटर जिसमें बैक्टीरिया का जो कॉलोनी साइज नंबर है, इसका जो डोज है बैक्टीरिया का, वो कंपेयर टू दिस वन काफ़ी ज़्यादा है। और अब मैं ये पानी पीता हूँ, सेम बैक्टीरिया है लेकिन चूंकि डोज अलग अलग है तो ये मेरी बॉडी में जाके डिफरेंटली बिहेव करेगा, ये मेरी बॉडी में जाके डिफरेंटली बिहेव करेगा। ठीक है, सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंजरी। सेकेंड जनरल प्रिंसिपल ये है कि द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन इंजूरियस स्टिमुलस ऑल्सो डिपेंड ऑन द टाइप, स्टेटस, एडेप्टेबिलिटी एंड जेनेटिक मेकअप ऑफ द इंजर्ड सेल। यानी किस सेल को एक्चुअली हिट किया जा रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेल, इंजरी का आउटकम डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, द सेम इंजरी हैज वास्टली डिफरेंट आउटकम्स डिपेंडिंग ऑन द सेल टाइप। फॉर इंस्टेंस, द स्ट्राइएटेड स्केलेटल मसल इन लेग टॉलरेट्स कंप्लीट इस्कीमिया फॉर 2 to 3 hours, लेकिन जो ब्रेन के सेल्स हैं दे कैन नॉट टॉलरेट इस्कीमिया फॉर मोर देन ओनली अ फ्यू मिनट्स। तो ये है तो इस्कीमिया ही, लेकिन जो मसल सेल्स हैं लोअर लिम्ब के, उनकी टॉलरेशन कैपेसिटी डिफरेंट है और ब्रेन के सेल्स की टॉलरेंस कैपेसिटी बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, इसी तरह हर सेल का अपना अपना डिजाइन है। फॉर इंस्टेंस, व्हेन एक्सपोज टू द सेम डोज ऑफ टॉक्सिन, इंडिविजुअल्स हु इनहेरिट variants in the gene encoding for cytochrome P450 system may catabolize the toxin at a different rate, leading to different outcomes. So अगर मेरा ये सिस्टम तेज काम कर रहा है तो उस टॉक्सिन को मेरे सेल्स क्विकली मेटाबोलाइज कर देंगे और अवेलेबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिन इन द प्लाज्मा विल बी डिफरेंट एज कंपेयर टू अ पर्सन जिसमें ये सिस्टम स्लो काम कर रहा है। सो इट ऑल डिपेंड्स। तीसरा जनरल प्रिंसिपल है कि सेल इंजरी यूजुअली रिजल्ट्स फ्रॉम फंक्शनल एंड बायोकेमिकल एबनॉर्मैलिटीज in one or more of a limited number of essential cellular components. As we discuss in more detail later, different external insults and endogenous perturbations typically affect different cell organelles and biochemical pathway. अभी हम डिस्कस करेंगे कि जब हाइपोक्सिया होता है तो कौन सा सेलुलर ऑर्गेनेल ससेप्टेबल होता है इंजरी के लिए, अगर टॉक्सिन है तो कौन सा ऑर्गेनेल। ओके, फॉर इंस्टेंस, अगर देयर इज हाइपोक्सिया, डेप्रिवेशन ऑफ ऑक्सीजन and nutrients primarily impairs the energy dependent cellular function. So ATP नहीं बनेगा और ATP नहीं बनेगा तो ज़ाहिर है जितने भी सोडियम पोटेशियम पंप्स हैं या वो तमाम पाथवे जिसमें ATP यूज होता है, they will all be affected. So that's a general principle. ठीक है, तो ये कुछ जनरल प्रिंसिपल्स थे mechanisms of cell injury and cell death से related. अब they have in the upcoming sections divided different mechanisms of cell injury and death one by one. So hypoxia and ischemia. Ischemia is the reduced blood supply
supply, and hypoxia is reduced oxygen supply. So deficiency of oxygen leads to failure of many energy dependent metabolic pathway, and this makes sense कि hypoxia होगा, so there is decreased oxygen delivery to the tissues, and because of decreased oxygen delivery there is decreased ATP production. अब ATP is required for a lot of different cellular functions. So for example, there is a sodium potassium pump. इस sodium potassium pump का काम क्या है? सोडियम और पोटेशियम की मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द सेल. So that will be affected, for example, and you will expect all the differences in the normal regulation of the ionic gradient. वो सब disturb हो जाएगा. Cells subjected to stress of hypoxia that do not immediately die, actively compensatory mechanisms उनमें activate हो जाते हैं, और they are induced by transcription factor of hypoxia inducible factor. This is a gene, a set of proteins HIF1. HIF1 stimulates the synthesis of several proteins that help the cell to survive in the face of low oxygen. Some of these proteins such as VEGF stimulate growth of new blood vessels. ऑक्सीजन कम है लेकिन ज़्यादा ब्लड वेसल्स हो जाएंगी तो शायद कम ऑक्सीजन को कॉम्पनसेट कर सकें. सो ये जैसे ही ऑक्सीजन कम होता है बॉडी में, दैट इज़ द सेट ऑफ जीन्स विच आर ओवर एक्सप्रेस्ड, और ये प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाती हैं ताकि कम ऑक्सीजन को कॉम्बैट किया जा सके. अदर प्रोटीन्स इंड्यूस्ड बाय HIF1 causes adaptive changes in the cellular metabolism by stimulating the uptake of glucose in glycolysis and dampening the mitochondrial oxidative phosphorylation. Obviously ATP नहीं बन रहा तो mitochondrial oxidative phosphorylation जो है that is not happening properly because oxygen नहीं है ना, तो oxygen independent pathways activate हो जाते हैं. ठीक है, and this is all very important because आपकी बॉडी को anyways ATP तो चाहिए. ऑक्सीजन नहीं है तो ATP बनाने के दूसरे रास्ते खुल जाते हैं सेल के अंदर. Understandably, normal tissues with a greater glycolytic capacity because of the presence of glycogen are more likely to survive hypoxia better than those जहां पर limited glucose stores होते हैं such as brain. इसीलिए ब्रेन को हर वक्त ग्लूकोज की ज़रूरत है, और इसीलिए अगर हाइपोक्सिया होता है या इस्कीमिया होता है तो विद इन सेकेंड्स बंदा फेंट हो जाता है बिकॉज ब्रेन को ब्लड सप्लाई जाना बहुत ज़रूरी है. ओके Right, now although it seems counterintuitive, rapidly proliferating normal cells and cancer cells rely on aerobic glycolysis to produce much of their energy, so they need oxygen, a phenomenon referred to as Warburg effect. The reason for this is that the glycolysis yields less ATP per molecule of glucose burned than oxidative phosphorylation. Now, actually they don't need oxidative phosphorylation. That's basically dependent on glycolysis only, okay? And TCA cycles serve as precursor for the synthesis of cellular constituents, so that's not relevant at the moment. The point is, what is the point? इतना लंबा चौड़ा जब text होता है तो at the end of the day you need to be able to identify what is the point. The point is, if there is hypoxia and ischemia, there is low oxygen, there is low ATP generation, and the ATP affected activities of the cell will be disturbed. ठीक है, जो भी ATP डिपेंडेंट एक्टिविटीज़ हैं वो अफेक्टेड होंगी. सो परसिस्टेंट और सीवियर हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया अल्टीमेटली लीड टू फेलियर ऑफ ATP जनरेशन एंड डिप्लीशन ऑफ ATP सेल्स के अंदर. ओके, इससे होगा क्या? रिड्यूस्ड एक्टिविटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ATP डिपेंडेंट सोडियम पंप. सो सोडियम पोटेशियम पंप इज ऑल डिस्टर्ब एंड देन देयर इज ऑस्मोटिक इम्बैलेंस. द कॉम्पनसेटरी इंक्रीज इन द एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस, इससे क्या होगा? लैक्टिक एसिड बनेगा, डिक्रीज pH, एसिडोसिस. प्रोलॉन्ग वर्सनिंग और डिप्लीशन ऑफ ATP कॉजेज स्ट्रक्चरल डिसरप्शन ऑफ द प्रोटीन्स. अब यहाँ पे एक ये बड़ी अच्छा सा फ्लो डायग्राम है. एक्चुअली इस पूरे सेक्शन का ना फ्लो डायग्राम बहुत अच्छे हैं. अगर इस्कीमिया होगा यानी किसी भी वजह से किसी भी ऑर्गन को ब्लड नहीं मिल रहा तो माइटोकॉन्ड्रिया में देयर विल बी डिक्रीज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बिकॉज देयर इज डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई बिकॉज देयर इज इस्कीमिया, है ना. अब डिक्रीज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की वजह से ATP कम बनेगा, डिक्रीज ATP फॉर्मेशन. इस डिक्रीज ATP फॉर्मेशन की वजह से नंबर 1 सोडियम पंप काम नहीं करेंगे एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर विल बी स्वेलिंग इन द सेल, endoplasmic reticulum swelling, and there will be damage to the cell membrane, blood formation. Number 2, अगर ATP नहीं बनेगा तो obviously अब cell aerobic glycolysis तो नहीं कर पा रहा, oxidative phosphorylation नहीं कर पा रहा. Now it will undertake anaerobic glycolysis, और anaerobic glycolysis जो ऑक्सीजन के बगैर होती है उसमें what will be produced? There will be more and more lactic acid, pH कम हो जाएगी, इससे डैमेज होगा सेल. तीसरी चीज़ जो होती है वो ये ATP ना होने की वजह से that is detachment of ribosomes and decrease and
and abnormal protein synthesis. So these are the effects of ischemia and hypoxia. Okay, so that's a very good diagram which summarizes everything for you. Now it has also been suggested that hypoxia per se increases the accumulation of the reactive oxygen species, which are also destructive to the cell. Ultimately, there is irreversible damage to the mitochondria and lysosomal membranes, and this is where cell death starts to kick in. Okay, the functional consequences of hypoxia and ischemia depend on the severity and duration of the deficit. For instance, heart muscles ceases to contract within 60 seconds of coronary occlusion. यानी अगर हार्ट को जाने वाली coronary blood vessel को आप completely बंद कर दो तो 60 seconds में heart muscle bye bye. If hypoxia continues, worsening ADP depletion causes further deterioration. Okay, so it all depends upon the timings. Okay, some cells can withstand hypoxia for a long time, some cannot tolerate hypoxia even for a few seconds. अच्छा जी, तो हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया ये एक मैकेनिज्म हो गया सेल इंजरी का, और यहाँ मैकेनिज्म में मेन स्टे यानी सेंट्रल मैकेनिज्म क्या है? रिड्यूस्ड एटीपी फॉर्मेशन. ठीक है, अगला जो मैकेनिज्म है दैट इज इस्कीमिया रीपरफ्यूजन इंजरी. अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस the restoration of the blood flow to the ischemic but viable tissue results पैराडॉक्सिकली इन इंक्रीज सेल इंजरी. पैराडॉक्सिकली वर्ड का मतलब क्या है? देखो बात ये है कि ये एक फॉर एग्जांपल सेल है और इस तरफ एक ब्लड सप्लाई आ रही है, और ये ब्लड सप्लाई किसी वजह से बंद हो गई तो अब यहाँ ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच रही, तो ये सेल जो है इसमें इंजरी शुरू हो जाएगी और रिड्यूस्ड एटीपी फॉर्मेशन और सेल डेथ की तरफ जाएगा. लेकिन सपोज सडन कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ जो थ्रोम्बस था वो अब ओपन हो गया और ब्लड सप्लाई रीस्टोर हो गई. अच्छा, जब रीस्टोर हो गई तो इसको हम कहते हैं रीपरफ्यूजन. अब होना तो ये चाहिए कि जब ब्लड सप्लाई रीस्टोर हो जाए तो इंजरी विंजरी सब सेट हो जाए, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब ये ब्लड सप्लाई रीस्टोर होती है तो इंजरी बढ़ जाती है. दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड पैराडॉक्सिकल बिहेवियर. पैराडॉक्सिकल बिहेवियर का मतलब ये है कि आप एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे थे, हो कुछ और गया. आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब ब्लड सप्लाई रीस्टोर होगी यानी जब रीपरफ्यूजन होगा तो इंजरी खत्म हो जाएगी, लेकिन इंजरी मजीद बढ़ जाती है. दिस इज़ कॉल्ड पैराडॉक्सिकल बिहेवियर एंड दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज इस्कीमिया रीपरफ्यूजन इंजरी. यानी पहले इस्कीमिया था, अब रीपरफ्यूजन की वजह से इंजरी हो रही है. ठीक है, दिस इज द रिवर्स ऑफ द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द रिस्टोरेशन ऑफ द ब्लड. यानी रिस्टोरेशन ऑफ ब्लड पे व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट कि इंजरी खत्म हो जाए, लेकिन यह इंजरी खत्म नहीं होती. ठीक है, Okay, several mechanisms may account for the exacerbation of the cell injury resulting from reperfusion. क्यों ऐसा होता है कि इंजरी खत्म होने के बजाय इंजरी मजीद बढ़ जाती है रीपरफ्यूजन पर? A few theories. Number one, new damage may be initiated during reoxygenation by increased generation of reactive oxygen species. होता ये है कि this cell is now devoid of oxygen because of ischemia. जब suddenly इसको ऑक्सीजन मिलती है तो they start producing reactive oxygen species which causes the perfusion injury. The second is the inflammation that is induced by the ischemic injury may increase the reperfusion because it enhances the influx of leukocytes and plasma proteins. The products of activated leukocytes may cause additional tissue damage and injury. So what they are now saying कि एक तो जब ये ब्लॉकेज यानी इस्कीमिया खत्म होता है तो धप करके ऑक्सीजन यहाँ पहुँचती है और बहुत सारा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनता है और ये डैमेज करता है. दूसरा ये कि यहाँ पे जो इम्यून सेल्स और इन्फ्लेमेशन था वो भी यहाँ इजीली एक्सेस होता है टिश्यू तक, तो टिश्यू में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, डैमेज बढ़ जाता है. सो दीज आर द टू कॉमन पोस्टुलेटेड थ्योरीज कि ब्लड सप्लाई रीस्टोर करने से इंजरी होती क्यों है. ठीक है, तीसरा मैकेनिज्म जो हमें डिस्कस करना है जो टिश्यू इंजरी में इट्स अ मेजर प्लेयर इज द जनरेशन ऑफ द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रेफर्स टू सेलुलर एबनॉर्मैलिटीज दैट आर इंड्यूस्ड बाय रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, और फ्री रेडिकल मीडिएटेड सेल इंजरी इज सीन इन मेनी सर्कमस्टांसेस इंक्लूडिंग केमिकल्स, रेडिएशन इंजरी, हाइपोक्सिया, इवन रीपरफ्यूजन इंजरी. इन सब चीज़ों में देर इज जनरेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज. इन ऑल दीज केसेज द सेल डेथ बाय नेक्रोसिस is the predominant form, but it can be a mixed pattern, necroptosis. Free radicals are chemical species with a single unpaired electron in the outer orbit. Such chemical states are extremely unstable and they react with the cellular machinery and destroy the cell. Generation and removal of the reactive oxygen species हमारी बॉडी में हर वक्त ही काम चल रहा होता है. We are all the time producing reactive oxygen species और हर वक्त इनको हैंडल किया जा रहा होता है, इनको रिमूव किया जा रहा होता है बॉडी सिस्टम से. सो क्या है
देखते हैं रॉस के दो मेजर पाथवे। पाथवे नंबर 1 है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज आर प्रोड्यूस नॉर्मली इन स्मॉल अमाउंट्स इन ऑल द सेल्स ड्यूरिंग redox reactions that occur during the mitochondrial respiration and energy generation. जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रही होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, देयर आर अ लॉट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन स्टेप्स, जिसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो उस वक्त ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती हैं। इन दिस प्रोसेस मोलेकुलर ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया टू जनरेट वाटर। द रिएक्शन इज इम्परफेक्ट, सो वी नो दैट। अच्छा, कौन कौन से तरह के रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनते हैं? दे आर सुपर ऑक्साइड्स, they are peroxides such as hydrogen peroxide, and by the action of enzyme superoxide dismutase. So these intermediates include superoxide, peroxide, which is converted to the hydrogen peroxide. The oxygen जिसके पास free radical है, superoxide is converted to hydrogen peroxide by the action of superoxide dismutase. Hydrogen peroxide is more stable than superoxide. So we initially generate this superoxide, which is converted into a relatively stable molecule, which is hydrogen peroxide. और यहाँ पे जो enzyme involved है, that is superoxide dismutase. ठीक है? Right. And H2O2 can, which is hydrogen peroxide, can cross the biological membranes. In the presence of metals such as iron, H2O2 is converted to highly reactive hydroxyl radical by Fenton reaction. The properties and pathologic effects of ROS are summarized in table, so we will have a look at the table in a minute. So these are the free radicals: superoxides, hydrogen peroxide, hydroxyl radical, and peroxynitride. All very very dangerous, हाँ? और इनका mechanism of productions ये कैसे बनते हैं और all written here. Superoxides are produced by the redox reactions in mitochondria. Hydrogen peroxide is produced from the superoxide by superoxide dismutase. Hydroxyl radical is produced by the reaction of hydrogen peroxide with a metal by Fenton reaction. And peroxynitrate are produced by interaction of superoxides and nitrous monoxide. And this is mediated by nitrosynthase. Very important information. और ये किस तरह बॉडी से रिमूव होते हैं? So conversion to H2O2 is the main mechanism by which superoxide is handled. और ये process कौन करता है? सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज। इसी तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या होता है? इट इज कन्वर्टेड टू वाटर एंड ऑक्सीजन बाय ग्लूटाथायोन पेरोक्स। सो ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज इज अ वेरी गुड थिंग बेसिकली बिकॉज इट इज कन्वर्टिंग reactive oxygen species into inert things, water and oxygen. है ना? How is hydroxyl radical handled? Also by glutathione peroxidase. And how is peroxynitrite handled? Conversion to nitrite by the enzymes in mitochondria. So remember, glutathione peroxidase is a beautiful thing because it saves you from reactive oxygen species. अच्छा, अब इन reactive oxygen species के क्या pathological effects हैं? So superoxides can cause direct damage on lipid, protein and DNA, and similarly hydrogen peroxide can be converted into hydroxyline, destroy the microbes as well as the cell. So this is actually a defense mechanism of the cell to kill a lot of microbes as well, but our cells can be destroyed as well. And these two reactive oxygen species can also damage lipid, protein, DNA molecules. So that is a very high yield table, I would say. Okay, right. Now reactive oxygen species are produced. एक तो हमने ये देखा कि how are the reactive oxygen species produced in the mitochondria by the redox reactions. What is the other way that the reactive oxygen species are produced? They are produced in the phagocytic leukocytes, mainly the neutrophil and macrophages. इनमें बन रहा है as a weapon to destroy the ingested microbes. So if this is your neutrophil, inside the neutrophil we produce a lot of reactive oxygen species. They are good for us because if there is a bacteria engulfed, this reactive oxygen species will attack on the bacteria and try to kill the bacteria. Okay, the ROS are generated in the phagosomes and phagolysosomes, and because of the respiratory burst they damage the bacteria. So that's a good thing. ये हम सब डिस्कस कर चुके इस टेबल में already. Now the generation of free radical is increased under several conditions. The absorption of radiant energy such as ultraviolet radiation, X-rays, ionization radiation, they all can hydrolyze water and they can produce free radicals. Okay, hydrogen free radical as well as oxygen free radicals. The enzymatic metabolism of exogenous chemicals such as carbon tetrachloride can be converted into reactive oxygen species. Inflammation में reactive oxygen species ज़्यादा हो जाती हैं, कैंसर में ज़्यादा हो जाती हैं, ischemic tissue में ज़्यादा हो जाती हैं. पर्टिकुलरली अगर ischemic tissue, अगर ये सेल है और यहाँ ischemia हुआ है और अब इस ischemia को हटा दें तो सडन गश ऑफ ब्लड अंदर जाएगा, तो बहुत सारी ऑक्सीजन जाएगी, बहुत सारी ऑक्सीजन जाएगी तो बहुत सारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा और बहुत सारा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी बनेगा. ओके,
Right. What else that we need to know is cells have developed mechanisms to remove the free radicals and thereby minimize their injurious effect. और ये removal mechanism मैंने आपको actually इस table पे already बता दिया. किधर गया table? ये. The main one that you have to remember is the superoxide dismutase, which convert the superoxide into hydrogen peroxide. The other one is the glutathione peroxidase. Okay, so this is what is all written here as well. Superoxide dismutase is one of the handling mechanism, and glutathione peroxidase is the other one. And we also have catalases present in the peroxisome, catalyzes the decomposition of hydrogen peroxide into water and oxygen. So remember these heroes of your body. They are superoxide dismutase, glutathione peroxidase, and catalases. They are very good molecules. They prevent you from the damage of reactive oxygen species. Now, cell injury caused by the reactive oxygen species, again we have talked about it. They can cause lipid peroxidation and cross-linking of the protein damage, and DNA damage. So remember this table, in fact, and you will know everything you need to know about reactive oxygen species. Okay, now there are also injury because of some toxins. Toxins including environmental chemicals and substances produced by infectious pathogens, and they can induce cell death as well as cell injury. There can be direct acting toxins. Some toxins act directly by combining with a critical molecular component or cellular organelle. For example, mercury chloride poisoning. Mercury binds to sulfhydryl groups of various cell membrane, causing inhibition of the ATP dependent transport. Many anti-neoplastic chemotherapeutic drugs, they can also induce cell damage by direct cytotox, so they can directly damage a cell structure component. And then there are latent toxins. Many toxic chemicals are not intrinsically active, but they must first be converted into a reactive metabolite, which will then act on a target cell. So ये target cell है, ये आपने कोई toxin ले लिया, ये toxin directly act नहीं करेगा, पहले ये एक intermediate metabolite में convert होगा, such as in liver, और फिर ये metabolite जाकर के cell पे action करेगा. Right? For example, this is usually accomplished by cytochrome P450 system in the smooth endoplasmic reticulum of liver. Carbon tetrachloride इसकी example है. Once widely used in the dry cleaning industry, it's now banned because of its very very toxic effects. In fact, ये analgesic acetaminophen belong this category. ये भी अब मतलब चीज़ें जो banned हो गई हैं. Actually होता ये है कि जब medicine market में आती है, so we start seeing, that is the phase 4 of the clinical trial, when we start seeing the complaints because of the drugs. So carbon tetrachloride is one of the thing. It was never used, for example, for any treatment, but in some industries it was used. So I'm talking here about the phase 4 trials of the drug. बहुत सारी drugs भी दे दी जाती हैं, उसके बाद market में आने के बाद उनके side effects पता लगते हैं, then they are banned. Okay. Right, the effect of carbon tetrachloride is still instructive as an example of the chemical injury. CCl4 is converted to toxic free radical principally in the liver, and that free radical can destroy the liver cells, leading to a lot of different problems such as fatty liver or even acute hepatic failure. Okay, so toxin. So what we are actually discussing, we are discussing different categories and different types of mechanisms involved in cell injury and subsequently cell death. Okay, now what we need to talk about is another mechanism, which is the stress to endoplasmic reticulum. Accumulation of misfolded protein in a cell can stress the compensatory pathway in the endoplasmic reticulum, and this can also lead to cell death. यानी होता ये है कि normally endoplasmic reticulum जो अपनी processing कर रहा है protein formation की, अगर वो disturbed है और misfolded proteins बनती हैं, तो cell basically उसको as a insult counter करते हैं and they initiate the apoptotic pathway. So during normal protein synthesis, chaperones in the endoplasmic reticulum control the proper folding of the protein. If unfolded proteins are produced, cells generate death pathways. Okay, when a large amount of misfolded protein accumulates in the cell and cannot be handled by the adaptive response, the signals are generated, resulting in the pro-apoptotic sensors, the BH3 only. हमने apoptosis last video में discuss किया था, and ultimately intrinsic pathway of cell death is initiated. ठीक है? So this is all talking about the same thing. So this, for example, is a severe endoplasmic reticulum stress, and you have a lot of misfolded proteins there, and there is activation of caspases and BH3, ultimately apoptosis. Okay.
Protein misfolding within the cells may cause disease, creating a deficiency in essential protein by inducing apoptosis. ये बात हम कर चुके हैं इस डायग्राम में. Actually, all this is already explained. Diseases caused by misfolded protein: cystic fibrosis, genetic problem, familial hypercholesterolemia, genetic problem, Tay-Sachs disease. So these are the diseases which are caused by different categories of protein, misfolding. For example, these three diseases are the diseases caused by mutant protein that are degraded, leading to their deficiency. अब इसमें CFTR की deficiency, LDL receptor की deficiency और Tay-Sachs में hexoaminidase beta subunit की deficiency. And as a result, what happen? अगर CFTR नहीं होगा तो leads to defect in the chloride transport and death of the affected cell. LDL receptors नहीं होंगे तो hypercholesterolemia हो जाएगा. Hexoaminidase beta subunit नहीं होगा, then there will be leads to storage of the GM2 gangliosides in the neuron. So that's a storage disease. So these are all examples of abnormal proteins which are in the cell, and because of those abnormal proteins, cells die and the relative and appropriate function is not undertaken. Then there is another category which is diseases caused by misfolded protein that result in ER stress induced cell loss. Retinitis pigmentosa, Creutzfeldt Jakob disease and Alzheimer. कौन सी proteins affected हैं are written here. क्या pathogenesis is all there. Then there is a category where the disease caused by the misfolded protein that result from both ER stress induced loss and functional. So the point is कि misfolded protein is one of the major cause of cell injury in genetic disorders. म्यूटेशन से ऑब्वियसली जेनेटिक सीक्वेंस डिस्टर्ब होगी तो प्रोटीन अजीबोगरीब से बनेंगे और उनसे ये सब डिजीजेस हो सकती हैं. स्पेंड सम टाइम, ट्राई टू मेमोराइज देम. ओके. Another cause of and mechanism of cellular damage is DNA damage. Exposure of cells to radiation, for example, or chemotherapeutic agents, intracellular generation of reactive oxygen species, ये सब they can all cause DNA damage. And DNA damage is sensed by the intracellular sentinel proteins which transmit signals ताकि P53 system activate हो जाए, because that is the system which will try to rescue the cell from the damage. P53 first arrest the cell cycle to allow DNA to be repaired before it is replicated. So if there is DNA damage, your P53 system try to rescue the damage. However, if the damage is too great to be repaired successfully by P53, then there is a problem. BH3 is activated and apoptosis and cell death will eventually follow. Okay. Now another mechanism is by inflammation. And inflammation is like a double-edged sword. It is something where it is good for your body. You require a certain amount of inflammation to combat infections and certain scenarios in the body. But if inflammation is chronic, persistent, it can be dangerous. कई सारे examples हैं. For example, if stomach में there is chronic gastritis, it can lead to gastric cancer even. अगर bowel में there is chronic colitis, for example, long-term infectious colitis, inflammatory colitis, it can lead to cancer formation. There are so many examples where chronic inflammation has been linked with increased risk of cancer formation. Hepatitis is another example. Chronic hepatitis C, liver cancer. So these are all the important associations. A common cause of injury to cell and tissue is the inflammatory reaction that is elicited by pathogen necrotic cells. Apoptotic cells usually inflammation elicit नहीं करते, but necrotic cells करते हैं. Now, in all these situations, inflammatory cells, including neutrophil, macrophages, lymphocytes, other leukocytes, they secrete products that evolved to destroy the microbes. बट ऑब्वियसली यार ये कॉमन सेंस की बात है ना. देखो, अगर ये आपका एक नॉर्मल सेल है, ये नॉर्मल सेल है, ये नॉर्मल सेल है, बीच में ये माइक्रोब छुपा हुआ है. अब ये जो इम्यून सेल आते हैं ना, ये ठका 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 फायरिंग करते हैं, और इनकी ये जो नॉन स्पेसिफिक फायरिंग होती है, इसमें ये माइक्रोब की तो जान जाती है, हमारे कुछ नॉर्मल सेल्स की भी जान चली जाती है. सो दैट्स हाउ इट इज, यू नो. कोलेटरल डैमेज इज व्हाट दे कॉल इट. Common events in cell injury from diverse causes. There are so many other diverse causes such as mitochondrial dysfunction. So mitochondria may be viewed as mini factories which produce ATP, and if there is any problem with mitochondria, ATPs will not be produced. And you know, if ATPs are not produced, अभी हमने ऊपर ये सारा hypoxia में डिस्कस किया था कि सोडियम पोटेशियम पंप काम नहीं करेंगे, प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स मेंटेन नहीं रहेंगे और सेल डेथ होगा. If so, this is mitochondrial dysfunction से भी cell injury होगी. If there are defects in the membrane permeability, this will also cause
cell death, because if there is increased membrane permeability leading ultimately to overt membrane damage, it's a feature of most forms of the cell injury that culminate ultimately into necrosis. The most important sites of membrane damage include mitochondria, the plasma membrane. अगर mitochondrial membrane, plasma membranes, lysosome की membrane, endoplasmic reticulum की membrane damage हो जाए तो बस खत्म हो गई ना कहानी, फिर बचा क्या सेल के अंदर. Mitochondrial membrane damage, as discussed earlier, damage to the mitochondrial membrane results in decreased production of ATP, which is required for so many different functions of your body, and we have discussed this multiple times. Plasma membrane का अगर damage होगा तो भाई security खराब हो गई, कुछ भी अंदर आएगा, कुछ भी बाहर जाएगा, ऑस्मोटिक imbalance. अगर lysosomal membrane damage हो गई तो और खतरनाक बात है. लाइसोसोम के अंदर बहुत सारी डेंजरस चीजें वो लीक होकर सेल के अंदर आ जाएंगी, and they will destroy the cell. Okay, so we have now concluded the discussion of the cell injury and cell death. We saw कि बहुत सारी different causes हैं, बहुत सारे different mechanisms हैं जो cell death करवाते हैं. So it looks very easy to study, but try to spend some time, try to understand what is BH3. एवरीथिंग इज लिंक्ड. हमने जो पिछली वीडियो की थी उसमें ये सब एपोप्टोटिक पाथवे किए हुए हैं, नेक्रोटिक पाथवे किए हुए हैं. आज उनके मैकेनिज्म्स पढ़ रहे थे कि भाई अगर हाइपोक्सिया होगा तो भी हो सकती है सेल इंजरी डेथ, टॉक्सिन से हो सकती है, ईआर स्ट्रेस से हो सकती है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पोशीज से हो सकती है, मिसफोल्डेड प्रोटीन से हो सकती है. ऑल दीज थिंग्स कैन कॉज सेल इंजरी एंड सेल डेथ. ठीक है, अब मुझे बात करनी है सेलुलर एडेप्टेशंस की. देखो सेलुलर एडेप्टेशंस जो हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. आपका सेल मुख्तलिफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस पर डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है. आपका सेल कोशिश करता है कि अपनी हद दर्जा कोशिश ये की जाए कि जो भी इंसल्टिंग स्टिमुलाई है उनके अगेंस्ट अपने आप को तैयार करे. इसे कहते हैं सेल का तैयार होना या सेल का एडेप्ट हो जाना. तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेलुलर एडेप्टेशंस. अच्छा, अब ये सेलुलर एडेप्टेशंस का बेसिकली मतलब ये होता है कि देखें अगर कोई एक सेल है आपकी बॉडी में, इस पर अगर कोई फिजियोलॉजिकल स्टिमुलस इस तरह का है कि द सेल सेंसेस द स्टिमुलस एंड देन अंडरगोज सम चेंजेस, तो वो जिस चेंज सिचुएशन में जाता है इसे हम कहते हैं कि इस सेल्स ने एडाप्ट किया है. नाउ इट कैन बी अ फिजियोलॉजिकल फिनोमिना, इट कैन बी अ पैथोलॉजिकल फिनोमिना. सो फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ स्टूडेंट्स को कि सपोज दिस इज योर हार्ट एंड दिस इज द राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सा ब्लड वेसल निकलता है? एओर्टा. अब अगर सपोज यहाँ किसी भी वजह से देयर इज एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसकी वजह से द ल्यूमेन ऑफ द एओर्टा विल बी अ वेरी वेरी स्मॉल ल्यूमेन, सो द लेफ्ट वेंट्रिकल हैज टू पंप अगेंस्ट अ स्मॉल ल्यूमेन, व्हिच मींस द लेफ्ट वेंट्रिकल हैज टू पंप अगेंस्ट अ हाई प्रेशर. और अगर ये कंडीशन लॉन्ग टर्म रहती है तो होगा क्या अल्टीमेटली कि यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल में जो सेल्स हैं, कार्डियक सेल्स, ये अब एक पैथोलॉजिकल स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं. वो स्ट्रेस क्या है? रिड्यूस्ड साइज ऑफ द ल्यूमेन, जिसकी वजह से अब इनको ज़्यादा एफर्ट्स लगानी है, ज़्यादा प्रेशर लगाना है ताकि इस रिड्यूस्ड ल्यूमेन में से ब्लड को पंप कर सकें. सो द लेफ्ट वेंट्रिकल इज गोइंग टू हैव एडेप्टेशंस. यहाँ हाइपरट्रॉफी होगी, अपने आप को इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी ताकि ये कोप अप कर सके फॉर दिस स्मॉल ल्यूमेन साइज. सो ऑल दिस चेंजेस विच द सेल अंडरगोज उसे हम कहते हैं एडेप्टेशंस. Adaptations are reversible changes in the size, number, phenotype, metabolic activity, or the function of the cells in response to change in their environment. So cells can increase their number, for example, they can increase or change their size. The metabolic activity of the cells may change and the functions may also change depending upon क्या stimulus है. Physiological adaptation usually represent response of cells to the normal stimulus, such as stimulation by hormones, endogenous chemical mediators. एक एग्जाम्पल तो टिपिकल मेंस्ट्रुअल साइकिल है कि विद एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हाट हैपेंस बेसिकली कि द बॉडी अंडरगोज सम चेंजेस, और वो जो बॉडी में चेंजेस आते हैं यूट्रस में इन पर्टिकुलर देयर आर हार्मोनल स्टिमुलाई, तो यूट्रस का साइज बढ़ता है. सो दैट्स अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी. सो दिस हैपेंस एवरी मंथ, है ना. दैट इज इन रिस्पॉन्स टू अ हार्मोन. बिल्कुल इसी तरह प्रेगनेंसी के अपने हार्मोनल सेटअप होता है बॉडी का, सो उसकी वजह से भी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में चेंजेस आते हैं. सो दीज आर ऑल फिजियोलॉजिकल, बट द एडेप्टेशंस कैन ऑल्सो बी पैथोलॉजिकल एडेप्टेशंस एंड दे आर यूजुअली इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसेस. जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि लेफ्ट वेंट्रिकल नाउ हैज टू पंप अगेंस्ट अ स्ट्रेस्ड सिचुएशन, और वो स्ट्रेस सिचुएशन यहाँ पर क्या है? स्ट्रेस सिचुएशन इज द रिड्यूस्ड ल्यूमेन साइज ऑफ द एओर्टा. ठीक है.
अच्छा जी, फिजियोलॉजिकल एज वेल एज पैथोलॉजिकल एडवर्टाइजेशंस कैन टेक सेवरल डिस्टिंक्ट फॉर्म्स, और वो फॉर्म्स क्या क्या हैं? नंबर वन, यू मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपरट्रॉफी. हाइपरट्रॉफी का बेसिकली मतलब ये होता है इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल्स, यानी जब किसी भी ऑर्गन में बिकॉज ऑफ एनी स्ट्रेस साइज बढ़ जाता है, दिस इज कॉल्ड हाइपरट्रॉफी. ठीक है. इन कॉन्ट्रास्ट हाइपरप्लेजिया भी हम पढ़ेंगे अगले सेक्शन में, उसमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं, यानी सेल्स एक्चुअली डिवाइड करते हैं. देयर इज एन इंक्रीज इन द सेल नंबर. स्टेटेड अनदर वे, इन प्योर hypertrophy there are no new cells, just bigger cells. Okay, so that's what hypertrophy is. यानी यहाँ पर भी hypertrophy होती है, cardiac hypertrophy. उतने ही cells होंगे but ये size में बड़े हो जाएंगे. Hyperplasia is an adaptive response in which the cells capable of replication they increase their number, and actually I mean to be honest बहुत सारे tissues में there is hypertrophy as well as hyperplasia both happening together. जैसे uterus है, pregnancy में uterus के cells का size भी बढ़ता है, number भी बढ़ता है, तो hypertrophy भी होती है और hyperplasia भी होता है. Now hypertrophy can be physiologic or pathologic, and it is caused either by increased functional demand or growth factor or hormonal stimulation. Now let's go through this discussion ताकि ये concept clear हो. The massive physiological enlargement of uterus during pregnancy occurs as a consequence of estrogen. So uterus के cells पर estrogen का effect है, जिसकी वजह से जो smooth muscles हैं uterus के, उनमें size भी बढ़ जाता है यानी hypertrophy, और number of smooth muscle cells भी बढ़ जाते हैं यानी hyperplasia. However, in contrast, in response to increased workload, the striated muscles in both the skeletal muscle as well the heart undergo only hypertrophy. Heart की मैंने आपको यहाँ पे example दी है कि अगर यहाँ stress होगा तो heart has to pump against a stress, और उस stress की वजह से the size of the cell increase. एक और इसकी example है your biceps. आप अगर जिम जाते हैं और हर वक्त biceps को dumbbells को move करते रहते हैं, so ये जो muscles यहाँ पर मौजूद हैं आपके biceps, उन पर ये load पड़ रहा है, so this is the stress. As a result of this stress, the size of the bicep increase. Number नहीं बढ़ता, सिर्फ size बढ़ता है. So this is the skeletal muscle hypertrophy. Okay, an example of, and these are physiological. ये physiological phenomena है. आप यहाँ पे physiologically अपना muscle mass का size बढ़ा रहे हैं. An example of a pathological hypertrophy is the cardiac enlargement that occurs with the hypertension or aortic valve disease. ये जो मैंने बात की कि अगर किसी भी वजह से there is valvular disease or there is hypertension because of atherosclerosis, then the heart has to pump against pressure, और इस तरह cardiac cells में के जो size बढ़ेगा, this is pathological hypertrophy. So hypertrophy can be physiological, can be pathological. Myocardium subjected to persistently increased workload as in hypertension or with a narrowed valve adapts by undergoing hypertrophy to generate the required higher contractile force. ये बात मैं समझा चुका हूँ कि against small lumen the heart has to pump more stronger. If on the other hand the myocardium is subjected to reduced blood flow due to an occluded coronary artery, the muscle cells may undergo injury. अच्छा, अब ये सेल साइज बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली यहाँ ब्लड सप्लाई भी नॉर्मल होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी वजह से मायोकार्डियल इस्कीमिया है, इन्फार्क्शन है, तो इन सेल्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, और जब ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो हाइपरट्रॉफी नहीं होगी, एक्चुअली मसल सेल इंजरी हो जाएगी. Now, the mechanism driving cardiac hypertrophy involve at least two types of signals. Number one, there are mechanical triggers such as the stretch and the soluble mediators that stimulate growth. There are some hormones, for example, growth factors and adrenergic hormones. So, just because of the mechanical reason, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी यहाँ मैं example दे रहा था biceps की. So, biceps पर there is a mechanical force. So, there is a mechanical load. इस mechanical load की वजह से there is hypertrophy. Heart में भी ऐसे ही है. Heart में because the lumen size of the aorta is now reduced, heart has to pump against more mechanical pressure. So उस pressure की वजह से that's an stimulus for increase in size of the cells. These stimuli turn on signal transduction pathways that lead to induction of number of genes, which in turn stimulate synthesis of many proteins, including growth factors such as structural proteins. The result is the synthesis of more protein, more myofilaments, and increase in the size. There may also be switch of contractile protein from adults to fetal system. For example, during the muscle hypertrophy, the alpha myosin heavy chain is replaced with the fetal beta form of the myosin. The reason being कि चूंकि इतनी ज़्यादा प्रोटीन बन रही होती है, तो बेसिकली इट स्विचेस बैक टू व्हाट वाज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस. इसको इस तरह से इमेजिन करें कि दिस इज द हार्ट सपोज, एंड अगेन राइट एंड लेफ्ट हार्ट पार्ट्स डिवाइडेड. अब यहाँ पे एक ये कार्डियक मसल सेल है, ये एओर्टा है, और अब इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई है तो ल्यूमेन साइज कम हो गया है. इट हैज़ टू नाउ
पंप ब्लड अगेंस्ट वेरी स्मॉल ल्यूमेन, तो प्रेशर को अब ये सेल सेंस करता है कि ओ भाई ये क्या हो रहा है, मुझे तो ज़्यादा पावर चाहिए यहाँ से ब्लड को निकालने के लिए। तो यहाँ पे वो जीन्स एक्सप्रेस होना शुरू हो जाती हैं जो प्रोटीन्स बनाती हैं। तो मोर मायोफिब्रिल्स, मोर मायोफिलामेंट्स, मोर प्रोटीन, मोर पावर टू द सेल. So this is all adaptation. The cell is adapting to the narrow lumen, that sort of thing. Okay, now an adaptation to stress such as hypertrophy can progress to functionally significant cell injury if the stress is not relieved. यानी सुनने में ये बात अच्छी लग रही है कि ठीक है यार, कार्डियक मसल जो सेल्स हैं वो स्ट्रांग हो गए, इनका साइज बढ़ गया, लेकिन बाई नाउ दे आर डिजीज्ड सेल्स, दे आर नो मोर नॉर्मल सेल्स, सो एट एनी पॉइंट दे कैन ऑल्सो लूज फंक्शन, और जब फंक्शन खत्म हो जाएगा देन दिस इज ये कैटास्ट्रोफी है, फिर मसला है. वॉट एवर द कॉज ऑफ हाइपरट्रॉफी, अ लिमिट इज रीच्ड बियॉन्ड द इनलार्जमेंट ऑफ द मसल मास, यानी कि हद तक इनका साइज बढ़ सकता है, उसके बाद ये रुक जाएगा. व्हेन दिस लिमिट इज रीच्ड व्हाट हैपेंस, सेवरल डीजेनरेटिव चेंजेस अकर इन द मायोकार्डियल फाइबर्स, ऑफ विच द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर द फ्रेगमेंटेशन एंड लॉस ऑफ द मायोफिब्रिल प्रोटीन्स. तो एक हद तक साइज बढ़ेगा, उसके बाद डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगी. देयर मे बी finite limits on the abilities of the vasculature to adequately supply the enlarged fibers. सोचें ना इस बात को कि पहले अगर वेंट्रिकल के अंदर इस साइज के सारे सेल्स थे तो उनको कितनी ब्लड सप्लाई चाहिए थी, अब इस साइज के सारे सेल्स हैं तो इनको ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए. ऑब्वियसली जितना ज़्यादा साइज बढ़ेगा ब्लड सप्लाई की डिमांड उतनी ही बढ़ेगी, और एक वक्त आएगा जब इट विल नॉट बी सफिशिएंट एंड देन देयरफॉर रिड्यूस्ड एटीपी प्रोडक्शन एंड देन डैमेज टू द साइटोस्केलेटल या प्रोटीन कंपोनेंट. द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स विल बी injury to the cardiac muscle cell, ventricular dilatation and cardiac failure. So remember, hypertrophy has a limit. ऐसा नहीं है कि टिश्यू का साइज बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और हमेशा ही बढ़ता रहेगा. It's not like that. There will be then a limit after which the injury will take over. तो second form of cellular adaptation जो मुझे डिस्कस करनी है, that is hyperplasia. हाइपरप्लेजिया मैंने आपको बताया इज एक्चुअली इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स. सो यहाँ पे एक्चुअल नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है एंड दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट सम सॉर्ट ऑफ स्टिमुलस. एज डिस्कस्ड अर्लियर, हाइपरप्लेजिया टेक प्लेस इन द टिश्यूज विच कंटेन सेल पॉपुलेशंस विच आर कैपेबल ऑफ गुड रेप्लिकेशन. इट मे अकर कंकरेंटली विद हाइपरट्रॉफी. सो हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया मे simultaneously occur in the same tissue. Hyperplasia can be physiological or pathological. जैसे बिल्कुल हमने यही बात डिस्कस की थी hypertrophy में, it can be physiological, it can be pathological. In both situations, cellular proliferation is stimulated by growth factors that are produced by variety of cell types. Now, जाहिर एक सेल है, अगर ये डिवाइड होना है इसको, so it needs some signals such as the growth factors. There are two types of physiological hyperplasia. Number one, hormonal hyperplasia, which is obviously because of the hormones. It is exemplified by proliferation of breast tissue during pregnancy and puberty. The other one is the compensatory hyperplasia, in which the residual tissue grows after removal or loss of the part. ये रीजनरेशन की कैटेगरी में भी आता है, यानी अगर कोई ऑर्गन है, जैसे छिपकली की दुम होती है, पूरी निकल गई दोबारा बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल, when the part of the liver is resected, mitotic activity in the remaining cells begin and some part is regenerated. Okay, the stimuli for hyperplasia in this setting are polypeptide growth factors, not important at the moment. Most forms of pathologic hyperplasia are caused by excessive hormonal or excessive growth factor stimulation. For example, after a normal menstrual period, there is a burst of uterine epithelial proliferation that is normally tightly regulated by the stimulatory effects of pituitary gland. A disturbance in the balance leading to the increased estrogenic stimulation causes endometrial hyperplasia. So if the balance is out and there is more and more hormonal input, then there is more and more hyperplasia. Benign prostatic hyperplasia is another example where the prostate tissue keeps on dividing in terms of number of cell replication, or it leads to hyperplasia, और इसमें stimulation होती है by the androgens. Stimulation by growth factors also is involved in hyperplasia that is associated with certain viral infections. For example, papilloma virus causes skin warts. So skin में papilloma virus का infection and the cells start to divide, and this is why you see warts in the skin. Okay, here the growth factors may be encoded by actually the viral genes and the cells proliferate. An important point is the fact that all of these situations, the hyperplastic process remains controlled. If the signals initiate it, abate,
the hyperplasia disappears. So that's a good news कि but that also has to be within limits. को एक लिमिट तक अगर सिग्नल मौजूद हैं और सेल प्रोलिफरेशन हो रहा है, सिग्नल हटा दें तो सेल प्रोलिफरेशन खत्म हो जाएगा. बट if the signals persist for a long time, then problems can happen because hyperplasia can also lead to cancer formation if their signals are not removed और फिर बाकी की mutations भी अगर आ जाएं. It is the responsiveness to normal regulatory control mechanism that distinguishes the pathologic hyperplasia from cancer. A very important distinction. यानी अगर स्टिमुलस को हटा दें तो हाइपरप्लेजिया वापस चला जाएगा. दैट्स हाइपरप्लेजिया. कैंसर में तो ये होता है कि स्टिमुलस हटा दें तब भी कैंसर के सेल प्रोलिफरेट करते रहते हैं. So that's a differentiating point between the two. Okay. Nevertheless, in many cases, pathologic hyperplasia constitutes fertile soil in which cancers may eventually rise. ये भी मैं बात कर रहा था ना कि हाइपरप्लेजिया अगर है, सेल का नंबर बढ़ता जा रहा है और स्टिमुलस भी वहीं पड़ा हुआ है, स्टिमुलस भी हट नहीं रहा, तो अल्टीमेटली दिस हाइपरप्लेजिया कैन लीड टू कैंसर or at least make a ground which is fertile for cancer formation. For example, the patients with hyperplasia of endometrium have increased risk of developing endometrial cancer. ठीक हो गया जी. तो हाइपरट्रॉफी के कॉन्सेप्ट्स देखे, हाइपरप्लेजिया के कॉन्सेप्ट देखे. नाउ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एट्रॉफी. एट्रॉफी में कोई चीज कम होगी. क्या कम होगा? साइज ऑफ द सेल्स कम होगा. द सेल साइज रिड्यूस्ड, श्रिंकेज ऑफ द सेल. वेयर अ सफिशिएंट नंबर ऑफ सेल्स आर इन्वॉल्व्ड, द एंटायर टिश्यू और ऑर्गन इज रिड्यूस्ड इन साइज. अगर ब्रेन में फॉर एग्जांपल एट्रॉफी है तो पूरे ब्रेन का साइज कम हो जाएगा. ऑल्दो द एट्रॉफिक सेल्स मे हैव डिमिनिश्ड फंक्शन, दे आर एक्चुअली नॉट डेड सेल्स. Causes of atrophy include decreased workload. हम अपने इंटरमीडिएट के ज़माने में एक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे. देयर वाज अ थ्योरी नोन एज यूज एंड मिसयूज फार्मूला. सो यूज जितना ज़्यादा जो ऑर्गन होगा उसका साइज उतना बढ़ेगा. इस पर बहुत से लोग बहुत सारे सवाल करते थे, बट एनीवेज दैट्स नॉट द टॉपिक है. और जो ऑर्गन यूज नहीं होगा, नो यूज, देन देयर इज रिड्यूस्ड साइज ऑफ दैट ऑर्गन. सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. अगर डिक्रीज वर्कलोड है, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को अपर लिम्ब में फ्रैक्चर हो गया और अपर लिम्ब अब मूव नहीं कर रहा, तो मसल्स पे वर्कलोड नहीं है और मसल्स काम नहीं कर रहा है, तो उनका साइज जो है वो कम हो जाएगा. ठीक है. ऑल्दो सम ऑफ दीज स्टिमुलाई आर फिजियोलॉजिकल सच एज लॉस ऑफ हार्मोन ड्यूरिंग द मेनोपॉज और दे कैन बी पैथोलॉजिक सच एज डीनर्वेशन. एक्सीडेंट में पूरी नर्व ही डैमेज हो गई, रेडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व, तो जिस कंपार्टमेंट को वो नर्व सप्लाई कर रही थी वो कंपार्टमेंट के मसल्स का साइज छोटा होना शुरू हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड डीनर्वेशन. Atrophy due to denervation. They represent a retreat by the cell to a smaller size at which the survival is still possible. A new equilibrium is achieved between. So these cells are not dead cells. ये बात आपको याद रखनी है कि atrophic cells are just reduced in their size, but they are still alive. Cellular atrophy result from combination of decreased protein synthesis and increased protein degradation. जाहिर है जब सेल का साइज बढ़ता है तो हम कहते हैं कि जी प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ रही है, लेकिन जब सेल का साइज कम होगा तो ऑब्वियसली प्रोटीन सिंथेसिस कम होगी और प्रोटीन डेग्रेडेशन बढ़ जाएगी. सो प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी. The degradation of the cellular proteins occur mainly by ubiquitin proteasome pathway, nutrient deficiency and disuse, यानी यूज नहीं हो रहा वो ऑर्गन, तो इट विल एक्टिवेट द यूबिक्विटिन लाइगेज पाथवे, जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रोटीन्स डिग्रेड होना शुरू हो जाती हैं. इन मैनी सिचुएशंस एट्रॉफी ऑल्सो इज एसोसिएटेड विद ऑटोफेगी. हमने ये पढ़ा था, पिछली वीडियो खोल के देखें कि ऑटोफेगी में किस तरह एक सेल कन्वर्ट हो जाता है इनटू एन ऑटोफेगोसोम ताकि बुरे वक्तों से गुजारा कर ले और दोबारा अगर हालात कभी सही हों तो ये एक नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है. अब एक और मुझे So what we have been doing is we talked about cellular adaptation. Number one, we talked about hypertrophy, which is increase in the size of the cell. Then we talked about hyperplasia. कहाँ गया भाई? Hyperplasia नहीं नजर आ रहा यार. Hyperplasia, which is the increase in number of cells. Then we talked about atrophy, which is reduced size. And now is number 4, called metaplasia. Metaplasia is a change in which one adult type epithelium is replaced by another adult type epithelium. और ये मैंने पहले भी मुख्तलिफ वीडियो में कई दफ़ा ये बात समझाई है कि what actually is metaplasia. So for example, we have esophagus and then stomach. Okay. अब अगर if somebody is experiencing GERD, which is the gastroesophageal reflux disease, तो उसमें क्या होगा बेसिकली कि यहाँ स्टमक के जो एसिडिक कंटेंट्स हैं वो यहाँ तक पहुँचेंगे. अब without telling the types of epithelium, अभी पढ़ाता हूँ एग्जाम्पल्स में. Imagine कि there is one particular type of epithelium in the lower end of the esophagus and there is a different type of epithelium in stomach. So reflux की वजह से क्या होगा कि acidic contents of the stomach are going into the esophagus. So with the passage of time what happens कि esophagus का जो lower part है
उसमें एपिथेलियम चेंज हो जाती है और बिल्कुल वैसी ही हो जाती है जैसी स्टमक में है. सो वन टाइप ऑफ एपिथेलियम विच वाज द नॉर्मल एपिथेलियम ऑफ द esophagus is now replaced by another type of epithelium because of a continuous irritation. This is known as metaplasia. So metaplasia is the change in which one epithelium type is replaced by the other. In this type of cellular adaptation, a cell type sensitive to a particular stress, जैसे अभी जो मैंने एग्जांपल बताई थी उसमें particular stress और consistent stress था acidic environment. ठीक है. Metaplasia is thought to arise by reprogramming of the stem cells to make a new type of epithelium. इसकी कई सारी एग्जांपल्स हैं. एक एग्जांपल फॉर एग्जांपल है इन द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम ऑफ हैबिचुअल सिगरेट स्मोकर्स इन होम द नॉर्मल सिलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम ऑफ द ट्रैकिया और एंड ब्रोंकस आल्सो आर रिप्लेस्ड बाय द स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम. सो नॉर्मली हम सब के जो लोग स्मोक नहीं कर रहे हैं, जिनका हेल्दी एपिथेलियल स्ट्रक्चर है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उनमें देयर इज सिलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम ट्रैकिया में और ब्रोंकस में. लेकिन जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उसमें दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज रिप्लेस्ड विद स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम एंड दिस इज व्हाट वी कॉल मेटाप्लेजिया. नाउ द रग्ड स्ट्राटिफाइड स्क्वामस सेल्स मे बी एबल टू सर्वाइव द नॉक्सियस केमिकल. ऐसा हुआ क्यों? वाई सिगरेट स्मोकिंग? क्योंकि स्मोकिंग के जो केमिकल सब्सटेंसेज हैं उनको बर्दाश्त करने के लिए ये सिलिएटेड एपिथेलियम कोलुमिनर ठीक नहीं है, उसके लिए मजबूत एपिथेलियम चाहिए विच इज द स्क्वामस एपिथेलियम. सो बेसिकली योर बॉडी इज ट्राइंग टू अडैप्ट टू द चेंज. स्मोकिंग शुरू कर दी तो ये एक चेंज है और इसके लिए एडाप्टेशन करनी है, नए तरह का सेल बनाना है, दैट इज मेटाप्लेजिया. Although the metaplastic squamous epithelium has survival advantages, important protective mechanisms are lost such as mucus secretion and ciliary clearance. अब जाहिर है देखो जो ट्रैकिया है उसका काम क्या था? एयर कंडक्ट करना, और उस काम के हिसाब से इसमें एपिथेलियम फिट की गई थी, सिलिएटेड कोलुमिनर. अब स्मोकिंग शुरू कर दी बंदे ने, एपिथेलियम का डिज़ाइन चेंज हो गया, तो वो सेल शायद सर्वाइव तो कर जाएं लेकिन जो काम होना था यहाँ अब वो काम तो नहीं होगा ना. सो एपिथेलियल मेटाप्लेजिया इज देयरफॉर अ डबल एज स्वॉर्ड. तो सेल बच भी जाते हैं और अपना काम लेकिन छोड़ देते हैं. ठीक हो गया. Metaplasia need not always occur in the direction of the columnar to squamous epithelium. In chronic gastritis, for example, या reflux disease जो मैं अभी बता रहा था आपको, उसमें क्या कहानी है देखें. उसमें ये होता है कि esophagus का जो लोअर एंड है इट अंडरगो द मेटाप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन टू द गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल टाइप ऑफ कॉलुमनर एपिथेलियम. सो यूजुअली वहाँ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होनी थी लेकिन अब कॉलुमनर हो जाएगी. सो मेटाप्लेजिया ऑल्सो अकर इन mesenchymal cells, bone marrow में for example. So there are different examples, trachea, esophagus. The influence that induces metaplastic change in an epithelium if persistent may predispose to malignant transform. Now that's important. इसीलिए जो lower end of esophagus है, जो मैंने यहाँ डायग्राम कहीं बनाई थी, lower end of esophagus, यहाँ पे एडिनोकार्सिनोमा का रिस्क बढ़ जाता है उन लोगों में जिनमें मेटाप्लेजिया हुआ है. और मेटाप्लेजिया हुई हुई esophagus को हम नाम देते हैं Barrett's esophagus. So Barrett's esophagus lower end of esophagus को कहते हैं उस वक्त जब इसमें intestinal type या columnar cuboidal type epithelium दिखना शुरू हो जाती है. And this Barrett esophagus is more prone to cancer formation. ठीक है, राइट. तो that was all about it. Hypertrophy हमने देखा, hyperplasia देखा, metaplasia. So we talked about all these things, right? All right. Now let's talk about intracellular accumulations. Under some circumstances, what happens कि cells may accumulate abnormal amounts of various substances. देखिए नाम से ही जाहिर है ना, इंट्रासेलुलर accumulation. So सेल के अंदर there will be more than usual accumulation of some stuff. और वो some stuff क्या है अभी देखते हैं थोड़ी देर में. The substances may be located either in the cytoplasm or inside the organelles, typically the lysosome, or even in the nucleus, and it may be synthesized by the affected cells or may be produced somewhere else and stored in the cells somewhere else in the body. Okay. The main pathways of abnormal intracellular accumulation are inadequate removal and degradation of excessive production of an endogenous substance. So आपकी बॉडी में कोई चीज़ अगर रिमूव नहीं हो रही या एक्सेस अमाउंट में है तो फिर वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है. और इसकी कुछ सिलेक्टेड एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल अ वेरी टिपिकल एग्जांपल इज द फैटी चेंज. एज द नेम इंडिकेट, इस पे फैट्स एक्यूमुलेट होंगे सेल्स के अंदर और दिस इज ऑल्सो नोन एज स्टीएचओसिस. और इसकी एक टिपिकल एग्जांपल है लिवर. इट इज मोस्ट ऑफन सीन इन लिवर सिंस दिस इज अ मेजर ऑर्गन इन्वॉल्व्ड इन फैट मेटाबॉलिज्म बट मे ऑल्सो अकर इन हार्ट, skeletal muscles, kidneys as well as some other organs. Steatosis may be caused by toxins, protein, malnutrition, diabetes mellitus, obesity, anorexia. In all these situations,
the fat metabolism is disturbed, and then the triglycerides start getting deposited within the cells, particularly the liver, and we use this term then fatty livers, becoming very, very common these days in developing countries because of the amount and the quality of the fat consumed in their diet and the junk foods. Now there is another deposition which is the cholesterol and cholesterol esters. Now cellular cholesterol metabolism is tightly regulated usually to ensure normal generation of cell membranes, because cholesterol is one of the job of the cholesterol is to be a contributory factor to the formation of cell membranes without significant intracellular accumulation. So normally it is pretty tightly controlled. However, phagocytic cells may become overloaded with lipid, triglycerides, cholesterol, and cholesterol esters in several different pathologic processes, mostly characterized by increased intake or decreased catabolism of lipids. Of these, atherosclerosis, for example, is the most important. The role of lipid and cholesterol deposition in pathogenesis of atherosclerosis तो कहीं और हमने डिस्कस की है, but the point is phagocytic cells है, for example, they are phagocyting something. So phagocytosis के नतीजे में अंदर a lot of cholesterol and cholesterol esters will be produced. If the process increases to great extent, then the deposition is increased and hence intracellular accumulation of cholesterol and cholesterol esters. Proteins can also be accumulated within the cells. Morphologically, this is less common as compared to the fatty change, but anyways, this happens. Okay, it's less common than the lipid accumulation, but this also happens. Right. What else? In kidneys, for example, the traces of albumin filtered through the glomerulus are normally reabsorbed by pinocytosis in the proximal convoluted tubule. However, in disorders with heavy protein leakage, more and more protein will be leaked and more protein will be reabsorbed, and more protein will be accumulated within the cells. So if this is Bowman capsule, this is proximal convoluted tubule and loop of Henle, and there is a proximal convoluted tubular cell. So agar albumin leak ho rahi hai, such as in any glomerular nephropathy, such as nephrotic syndrome, तो filtrate में बहुत सारा protein होगा and the cells will try to reabsorb that, और इन cells में वो protein accumulate होना शुरू हो जाएगा. So that is protein accumulation. Okay, which actually appears pinkish and is also called the hyaline change. The process is reversible. If the proteinuria is now no more there, then the process of accumulation of protein is also reversed. Okay, other example of protein aggregation are discussed elsewhere in the book, which is related to alcohol usage, but the point is to tell you कि जो intracellular accumulations हैं, they come in different flavors. Fat can be accumulated, fatty change. Cholesterols can be accumulated, proteins can be accumulated. What else? Glycogen can be accumulated within the cells. Excessive intracellular deposits of glycogen are usually associated with abnormalities in the metabolism of glucose and glycogen. There's so many diseases such as glycogen storage diseases, जिसमें glycogen की metabolism disturb है, तो cells में फिर glycogen जमा होना शुरू हो जाता है. Okay, there can be several pigments which can be accumulated within the cells. Pigments are basically colored substances that are either exogenous pigment, बाहर से हम खाते हैं उनको, or they are produced within the body, such as melanin, such as lipofuscin, such as derivatives of hemoglobin. So these are all produced within the body, therefore they are called endogenous pigments. The most common exogenous pigment is the carbon, जो बाहर से हमारी बॉडी में एंटर होता है. It is a ubiquitous air pollutant present everywhere, है ना? When inhaled, it is phagocytosed by the alveolar macrophages and transported through the lymphatic channels to the regional tracheobronchial lymph nodes. Aggregates of pigmented blacken the draining lymph nodes, and therefore this is called anthracosis. So basically आपके respiratory system में कार्बन एंटर होता है या मैक्रोफेजेस एंड लंग्स में, वो उसको ईट अप करते हैं और ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स, तो अभी सारा सिस्टम ब्लैक होना शुरू हो जाता है. लाइपोफस्किन, तो ये एक्सटर्नल पिगमेंट हो गया कार्बन. अब कुछ इंटरनल पिगमेंट्स सच एज लाइपोफस्किन. इट इज ऑल्सो नोन एज वेयर एंड टेयर पिगमेंट. इट्स एन insoluble brownish yellow granular intracellular material that accumulates in a variety of tissues with aging or atrophy. So those cells which are aging start accumulating lipofuscin. Lipofuscin represent complexes of lipids and proteins that are produced by free radical catalyzed peroxidation of polyunsaturated lipids of subcellular membranes. Although a lot of discussion, but lipofuscin किस तरह बनता है वो यहाँ बताया. It is not injurious to the cell, but is the marker of the past free radical injury. और जितना सेल एज करेगा उतना lipofuscin का अमाउंट बढ़ता जाएगा. The brown pigment, when present in large amounts,
imparts an appearance to the tissue, which is also then known as brown atrophy because there's a lot of brown tissue there. Melanin is another endogenous pigment which is brown blackish in color, is synthesized by the melanocytes located in the skin, epidermis, and act as a screen against the UV radiation. So it's normally a protective mechanism against UV radiation. Although melanocytes are not only source of melanin, adjacent basal keratinocytes in the skin can accumulate the pigment, as the dermal macrophages can also accumulate the same. So melanin can be present in different parts of the body, such as in freckles. You see the black dots. Hemosiderin is another internally produced pigment. It's a hemoglobin-derived granular pigment that is golden yellow in color, also brownish, that accumulates in the tissues when there is local or systemic excess of iron. So hemosiderin associated with iron excess. Iron is normally stored within the cells in association with proteins such as apoferritin, forming the ferritin. Small छोटे छोटे इस तरह से missiles बन जाते हैं, missiles बन जाते हैं, छोटे छोटे droplets बन जाते हैं when the iron combines with the apoferritin. Hemosiderin pigment represent large aggregates of these ferritin missiles. So basically what happens कि एक protein है apoferritin, it combines with iron and they make ferritin, और छोटा छोटा बहुत सारा ferritin droplets मिलके जो चीज बनाता है that is known as hemosiderin. So hemosiderin अगर tissues में होगा तो that basically means कि बहुत सारा iron available है. ठीक है? Although the hemosiderin accumulation is usually pathological, small amounts of pigment are normal in the mononuclear phagocytic system. So if it's in larger amount, then that's a problem. Excessive deposition of hemosiderin, called hemosiderosis, and more extensive accumulation of iron are actually discussed when we discussed about diseases where there are problems with the iron metabolism or degradation of the red blood cells. उस वक्त हम ये बात डिस्कस करते हैं कि जब there is a lot of degradation of the red blood cell, a lot of hemoglobin is produced, a lot of iron derivatives are produced, a lot of iron released combines with apoferritin to form ferritin, and small ferritin micelles then make hemosiderin. So hemosiderosis. It's discussed when we discuss the blood stuff. Okay, so these are the concepts, that different things which can be accumulated within the cell. Another thing which actually is a kind of accumulation within the cell, but is actually a change in the cell, जिसमें calcification हो जाती है. So pathological calcification. So let's talk about what are the different types of pathological calcifications. Pathological calcification actually are a pretty common process in a wide variety of disease states, and is a result of an abnormal deposition of calcium salts within the cell or between the cells. Okay, now there are a few flavors that you need to know. One is known as the dystrophic calcification. Dystrophic calcification is almost always indicative of a disease process. In this form, calcium metabolism is normal, but there are deposits in the injured or the dead tissue. So dystrophic calcification जब कभी हमें मिलती है, that identifies the tissue कि या तो वहाँ पे इंजरी हुई है या it's a dead tissue. तो बॉडी में जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है या the level of calcium है, that is actually normal, but there is death in the tissue. So इस dead tissue में या injured tissue में calcification होती है. It is virtually ubiquitous in arterial lesions such as atherosclerosis. So अगर artery है उसमें atherosclerosis है, forming macrophages, तो यहाँ calcification दिखेगी. So there is a disease first and then calcification. Although the dystrophic calcification may be an incidental फाइंडिंग, यानी ये होती है और उससे पता भी नहीं चल रहा होता, कोई सिम्टम नहीं होता, सडनली ये पता लगती है, सो दैट्स फाइन, बट इट मे समटाइम्स लीड टू ऑर्गन डैमेज. इट कैन अल्टीमेटली लीड टू एडवांस एजिंग, क्विक एजिंग और डैमेज, पर्टिकुलरली डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी लोकेशन क्या है. सो फॉर एग्जांपल अगर हार्ट है और हार्ट का वाल्व है और उसमें कैल्सिफिकेशन हो गई, देन दैट्स अ प्रॉब्लम. हार्ट की वाल्व की मूवमेंट नहीं होगी. सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द कैल्सिफिकेशन, सिम्टम्स उसके हिसाब से उसकी सिवियरिटी exhibit होगी. तो अगर फॉर एग्जांपल हार्ट का valve है, so it's something more serious. Okay, now dystrophic calcification of the aortic valve is an important cause of aortic stenosis. So again, depending upon कितने important site पर calcification है, उसके हिसाब से वो काम affect होगा.
Dystrophic calcification is initiated by extracellular deposition of crystalline calcium phosphate in the membrane-bound vesicles, which may be derived from the injured cell or the intracellular deposition of the calcium in the mitochondria of the dying cell. So if this is the cell, calcium may be deposited extracellularly or it may be deposited intracellularly, particularly inside the mitochondria. It is thought that the extracellular calcium is concentrated in vesicles by affinity for membrane phospholipids. It's a theory, you don't need to worry about it, but anyways, the fact that you must know is that dystrophic calcification is present usually in the injured or the dead tissue, and arteries are vulnerable, and depending upon the site or the location, symptoms may vary. Then there is another flavor of calcification which is known as metastatic calcification. अब यहाँ सुनिए, यहाँ जो calcium metabolism है, that is disturbed. So in this form there is problem with calcium metabolism, so it's usually associated with hypercalcemia. So there is increased calcium in the body, and that can be because of, for example, increased secretion of parathyroid hormone or increased turnover of the bone, such as in Paget's disease, or in some tumors, myeloma, leukemia, increased turnover of the bone, so more calcium in the blood. There can be vitamin D related disorders such as vitamin D intoxication or maybe sarcoidosis, sometimes tuberculosis as well. So chronic granulomatous diseases, उसमें भी parathyroid level बढ़ता है, so increased calcium, and then it may be associated with renal failure in which phosphate retention leads to secondary hyperparathyroid. So all these situations basically lead to one thing, which is increased calcium levels in the body, and we have increased calcium levels. Calcium starts getting deposited in some parts of the body, such as in connective tissue, in different solid organs, or even the connective tissues. Okay, so regardless the site, the calcium salts are seen on gross examination as fine white granules or clumps, often felt as gritty deposits. ऐसा लग रहा है कुछ गंदी सी कोई मट्टी जमा है, ठीक है. Histological examination में calcification appears as intracellular or extracellular basophilic deposits, blue deposits. Okay, metastatic calcification can occur widely throughout the body, but principally affect the interstitial tissues of the vasculature, solid organs such as kidneys, lungs, gastric mucosa. Calcium deposits morphologically resemble those described in the dystrophic calcification, although they generally do not cause clinical dysfunction. Extensive calcification in the lungs may be evident on radiograph and may produce respiratory deficits. So again, depending upon the site and location, symptoms may vary. Okay, so calcification अगर dead tissue में है तो dystrophic calcification, अगर hypercalcemia की वजह से normal tissues में है तो metastatic calcification. Okay, now this is a summary table which is telling us again one more time that deposition in the cells can be of fat, of cholesterol, of proteins, of glycogen. So we have done that all. Now a concept of cellular aging. अच्छा, ये word हम इतना commonly ना सुनते हैं ना use करते हैं. Aging का word तो use कर रहे होते हैं, but cellular aging इतना ज़्यादा trend में नहीं है. But the point is कि individuals age because their cells age. So I so like this statement, जो aging का हमारा process है, it's all because कि हमारे cells जो हैं internally they are aging. Although the public attention to the aging process has traditionally focused on cosmetic manifestations, यानी aging को हम relate करते हैं grey hairs के साथ, for example, skin changes के साथ, ये सारी चीज़ हम कहते हैं वो aging हो रही है, लेकिन actually इसके back end पर जाहिर है cells age कर रहे होते हैं, तो cell का function damage हो रहा होता है, and the person is getting prone to several diseases, और वो some of them are very very serious disorders such as cancers, Alzheimer's and ischemic heart disease. They are all because the cells are aging. Cells बूढ़े हो रहे हैं, अपना काम उनका वैसा नहीं है जैसा जवानी में होता था. Perhaps one of the most striking discoveries about the cellular aging is not simply a consequence of cells running out of steam, but in fact the regulated number of genes and signaling pathways that are evolutionarily conserved from each to mammals. इस पे मैं भी कमेंट नहीं कर रहा इवोल्यूशन पर. लेट्स ट्राई टू ग्रैस्प द कॉन्सेप्ट ऑफ सेलुलर एजिंग. तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि एजिंग की वजह से हमारी एजिंग होती है. दैट्स द कॉन्सेप्ट. ओके,
अब एजिंग होती क्यों है? वाई डू सेल्स एज? सेलुलर एजिंग इज द रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन द लाइफ स्पैन एंड फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स। so, वक्त के साथ साथ हमारे सेल्स की जो फंक्शनल कैपेसिटी है वो कम होती है। रीजंस फॉर दैट, फॉर एग्जांपल, accumulation of mutations in DNA. A variety of metabolic insults over time may result in damage to the nuclear and mitochondrial DNA. Reactive oxygen species, ज़ाहिर एक सेल है यार, ये पूरी जिंदगी 30-40 years it's exposed to a lot of different things such as reactive oxygen species. तो time to time उसके DNA में damage हो रहा है. So if after a certain point a lot of DNA mutations accumulate, that will lead to reduced function of the cell. So that's one cause, accumulation of mutations in DNA. Then the other one could be decreased cellular replication. Now, normal cells have a limited capacity for replication, and after a fixed number of cell divisions they become arrested in a terminally non-dividing state which is known as replicative senescence. Senescence aging को कहते हैं. Aging is associated with progressive replicative senescence of the cells. Cells from children have the capacity to undergo more rounds of replication than do in the older people. So जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं हमारे cells की replicative capacity कम होती है और हम कहते हैं कि cells are now facing replicative senescence यानी cell division aging. In contrast, cells from the patients with Werner syndrome, a rare disease characterized by premature aging, have markedly reduced in vitro lifespan. So, this disease, इसमें lifespan of the cell to divide is markedly reduced. Therefore, their aging phenomena is वेरी वेरी प्रीमेच्योर. एक आध मूवी भी बनी है इस पे बॉलीवुड की, आई थिंक अमिताभ बच्चन ने उसमें रोल प्ले किया है. वर्नर सिंड्रोम दिखाया गया है उसमें. ओके, या प्रोगेरिया इज अनदर डिजीज, सो डू सर्च फॉर दोज टर्म्स. रेप्लिकेटिव सेनेसेंस अकर्स इन एजिंग सेल्स बिकॉज ऑफ प्रोग्रेसिव शॉर्टनिंग ऑफ द टीलोमर. ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है. देखें, नॉर्मली हमारे जो सेल्स हैं ना, इफ आई शो यू इन द एग्जाम्पल, सो सेल्स at the end of the chromosomes there are sequences which are called telomeres. अब जैसे जैसे सेल डिवाइड करता है जो टीलोमर की लेंथ है देंगे शॉर्ट होती जाती है. पहले टीलोमर फॉर एग्जांपल इतना बड़ा था, अब डिवाइडिंग डिवीजन के साथ साथ ये ज़ाहिर पूरी जिंदगी में इसने कई दफ़ा सेल डिवीजन किया हुआ है इस सेल ने, तो हर सेल डिवीजन के साथ ये एंड में थोड़ा टीलोमर लूज होता रहता है. और अब देखें इतना ज़रा सा टीलोमर रह गया है. अब ये जो टीलोमर है ना, ये बेसिकली पूरे क्रोमोजोम को प्रोटेक्ट करता है. जब टीलोमर लूज हो जाता है या टीलोमर बहुत थोड़ा सा रह जाता है तो सेल को ऐसा लगता है कि ये जो क्रोमोसोम है अब ये डैमेज हो चुका है. सेल को ऐसा लगता है कि ये जो क्रोमोसोम है अब ये पहले जैसा नहीं रहा. तो सेल एक्चुअली डीएनए डैमेज को डिटेक्ट करता है. ऑल्दो डीएनए डैमेज हुआ नहीं होता, डीएनए अपनी जगह बेचारा सही है, लेकिन जस्ट बिकॉज टीलोमर का साइज कम हो गया है तो सेल को ऐसा लगता है कि देयर इज डीएनए डैमेज. और चूंकि सेल अगर डीएनए डैमेज को सेंस कर ले, देन द सेल्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स सेनेसेंस एंड एजिंग एंड टिश्यू डिसफंक्शन. ठीक है. अगर इसका एक ऑपोजिट सिनेरियो भी है यार. ऑपोजिट सिनेरियो ये है कि अगर ये टीलोमर ख़त्म ना हो और हमेशा एक्टिवेटेड रहे, इतना बड़ा ही रहे, तो ये सेल कभी डिवाइड होना ख़त्म ही नहीं होगा, यानी हमेशा डिवाइड होता रहेगा. दिस इज़ व्हाट वी कॉल कैंसर. सो कैंसर्स में जो टीलोमर्स हैं उनकी लेंथ रिटेन रहती है बिकॉज कैंसर में एक स्पेशल एंजाइम होता है विच इज़ नोन एज टीलोमरेज. सो ये टीलोमरेज जो है इस टीलोमर को हंसता खेलता रखता है. तो ये हंसता खेलता रहता है, सेल डिवाइड होता रहता है और कैंसर हो जाता है. लेकिन नॉर्मल एजिंग प्रोसेस में ये टीलोमर ख़त्म हो जाते हैं, टीलोमरेज होता नहीं है काम करने के लिए, टीलोमर का साइज छोटा हो जाता है और एजिंग होती है, सेनेसेंस एंड टिश्यू डिसफंक्शन. ठीक है. तो ये सारा कॉन्सेप्ट है इस पैराग्राफ का. टीलोमर्स आर शॉर्ट रिपीटेड डीएनए सीक्वेंसेस प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर इंश्योरिंग द कंप्लीट रेप्लिकेशन ऑफ द क्रोमोसोम एंड्स एंड फॉर प्रोटेक्टिंग द एंड्स ऑफ द. सो ये द टीलोमर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द क्रोमोसोम. टीलोमेरिक डीएनए ऑल्सो बाइंड प्रोटीन दैट शील्ड इट, preventing the activation of DNA damage machinery. When someric cells replicate, a small section of the telomere is not duplicated और इस तरह there is shortening of telomere. टीलोमर को इंटैक्ट रखने के लिए एक एंजाइम होता है विच इज टीलोमरेज. कैंसर सेल्स में ये टीलोमरेज बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से टीलोमर छोटा नहीं होता और कैंसर सेल्स इसीलिए डिवाइड करते रहते हैं. दे बिकम इमॉर्टलाइज्ड कैंसर सेल्स. उनमें डिवीजन होती रहती है. Okay. Now, defective protein homeostasis. With the passage of time, cells are unable to maintain normal protein homeostasis because of increased turnover and decreased synthesis of the protein. This also leads to aging of the cell. So yeah, we are trying to understand कि aging की causes क्या क्या हैं. So aging की एक cause है accumulation of DNA mutation, दूसरा है cellular replication का मसला, टीलोमेर वाला issue, फिर प्रोटीन बनाने में मसला which is defective protein homeostasis, तो cell apoptosis में enter हो जाता है. There has been great interest in defect, ये हम बात कर चुके.
nothing new. So that's all. Anything else, let me find out, which is important for you among bichromosomal ulceration? No. Okay, so the next cause of cellular aging is persistent inflammation. If because of any reason in the body there is persistent inflammation, such as diseases like whatever chronic inflammation, जहाँ पे atherosclerosis है for example, diabetes है for example, rheumatoid arthritis है for example, इनमें there is chronic inflammation and therefore chronically increased levels of cytokines. They are also important cause of aging. So as individuals age, the accumulation of damaged cells, lipids and other endogenous substances may activate inflammasome pathway, resulting in persistent low level of inflammation present all the time. Inflammation in turn induces chronic diseases such as atherosclerosis, type 2 diabetes. Cytokines produced during inflammation may themselves induce cellular alteration and aging. Clinical observations and epidemiological studies have shown that physical activity and, as mentioned previously, calorie restriction slow the aging process. So इसलिए कहते हैं कि शुगर कम इस्तेमाल करें डाइट में तो एजिंग देर से होगी, जवान रहेंगे. Whereas stresses perhaps activate, स्ट्रेस मत लिया करें यार, स्ट्रेस से एजिंग फास्ट हो जाती है. However, इसके एग्जैक्ट मैकेनिज्म्स पता नहीं है. So that's all about this particular chapter, a very important chapter of general pathology completed today. So let's hope that you like the video, and if you did, please subscribe the channel, share the video with your colleagues. आपसे मुलाकात होगी पैथोलॉजी के अगले चैप्टर में बहुत जल्द. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा.